Hello students, welcome to Sorasa classes. This is the question from GATE 2026, question number 61. Given the open disk, this omega equals to x square plus y square less than 1 with the open disk, and delta omega with the boundary of this. That means delta omega is x square plus y square equals to 1. If uxy is the solution of the Dirichlet problem, this, and uxy is equals to x square minus y square on delta omega. Okay. So uxy satisfy the Laplace equation uxx plus uyy equals to 0 in omega. And so uxy is harmonic in omega. Also in boundary, u is x square minus y square. So here uxx अगर हम लोग कैलकुलेट करें प्लस uyy अगर कैलकुलेट करें तो हम लोग को मिलेगा 2 minus 2 equals to 0. Therefore uxy is harmonic in boundary also. So uxy अगर ओपन डिस्क में भी हार्मोनिक है, एंड uxy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फंक्शन है जो बाउंड्री पे ये वैल्यू लेगा, तो उस बाउंड्री पे ये हार्मोनिक है एंड ओपन डिस्क पे भी हार्मोनिक है. सिंस द डिरिचलेट प्रॉब्लम इन ए डिस्क हैज ए यूनिक सॉल्यूशन and the boundary data is also harmonic here, so uxy can be x square minus y square inside the disk also, because हम लोग देखे कि uxy satisfy the harmonic equation in the open disk, and जो बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे उसका वैल्यू है x square minus y square, which is also satisfy the harmonic equation uxx plus uyy equals to 0. So uxy हार्मोनिक है ओपन डिस्क पे भी बाउंड्री पे भी, और हम लोग को पता है कि सिंस द डिरिचलेट प्रॉब्लम इन ए डिस्क हैज ए यूनिक सॉल्यूशन and the boundary data is also harmonic, so we can set uxy equals to x square minus y square in the whole disk. That means uxy equals to x square minus y square on omega union delta omega, that is on x square plus y square less than equals to 1. तो अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं. देयरफॉर u 1/2, 0 क्या होगा, दिस इज 1/4, एंड u 0, 1/2 क्या होगा, दिस विल minus 1/4. देयरफॉर for u 1/2, 0 and minus u 0, 1/2, the value will be 4 into 1/4 minus of minus 1/4. That means 4 into 1/4 plus 1/4. That means 4 into 1/2. So the answer is 2. So our value is 2. This is the answer. So this is the problem. This problem has answer 2. This is the Dirichlet problem. Okay. Thank you.